this meeting. Okay. Hello, everyone. So confirm once कि if the audio is clear or and the screen is visible, we can get started. Okay. Thank you. Thanks for confirmation. तो stop loss hunting की बात करेंगे. Actually, this is little complicated concept to understand. तो अगर ये समझ में ना आए, then we'll be taking examples from the live market itself, and उसके बाद आपको 100% definitely समझ में आ जाएगा. तो अभी के लिए बस हम समझते हैं कि what is stop loss hunting and how we can actually trade it. Okay, so this is it. So as usual, we're drawing support and resistance lines everywhere because these are most important aspects of any charts or any trades. Okay, stop loss hunting क्या होती है? तो सबसे पहली चीज stop loss hunting क्यों की जाती है? Why stop loss hunting is done? So let's say price is traveling within this range, and stop loss hunting will happen at very specific points. Why am I saying that? Because जो भी stop loss hunting करते हैं लोग, ऑपरेटर्स लोग, मतलब अगर आपको समझना है कर ऑपरेटर्स लोग है तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीजें होती है काफी बार. But if you don't want to accept there are operators and whatnot, I don't know what to tell you, but let's understand the concept. So this is the resistance level. Let me write it clearly over here. This is the resistance level. So what will happen is कि this resistance level, the price already before the stop loss hunting is lagging. Lagging means कि ये slowly travel करेगा, मतलब ये slowly move करेगा at this point. This will not be moving at a high pace, something like this. तो ऐसे points पर ये clearly breakout हो जाता है, something like this. कि ऐसे pace पर अगर कोई price travel कर रहा है, मतलब छोटे से pullbacks के हिसाब से, तो ये price मतलब as a valid breakout हम इसे assume कर सकते हैं. But at the stop loss hunting, what happens really is कि price is actually moving very slow at this point. Before resistance level or anything like that happens, price actually moves very slowly. Mute all on. Okay. So if the price is moving slowly, you need to be aware कि अगर you are entering any longs at this point, you shouldn't be going for a big target or something. मतलब you shouldn't be assuming कि आपको एक बार ये level break हो जाएगा तो you are assuming this level or something. अगर price इतना slowly move कर रहा है, the price is moving so slow like this, there is a 90% or 80% chance कि it will try to break. Actually, it will break this level. I've observed this many times. It will actually break this level slowly and try to convince you कि you're convinced. Try to convince you कि you have missed out on this whole rally and the price is going to shoot up further. So something like this will happen, and you think that कि अगर इस टाइम पे इतना ऊपर जा रहा है तो it will slowly move. अगर इतना ऊपर जा रहा है तो slowly ऊपर भी move करेगा. But that is actually really wrong thinking that can get you in trouble at this point. So understand, ये समझो कि अगर आप इतना slowly price अगर move कर रहा है तो it's better to sit on the sidelines, observe कि price resistance level के ऊपर जाकर कैसे behave कर रही है. How is it behaving after crossing the important resistance level or support level in case we're talking about the downtrend. But for uptrend, we'll consider this as a one case scenario. So let's say the price has been traveling like slowly like this, and we are assuming कि अपन से तो रैली मिस हो गई यार, अपन तो अब यहाँ पर तो एंट्री करनी है आपको, and this is actually a valid entry also, but we are talking specifically about the stop loss hunting scenario. So what will happen, what might happen at this point is the price will actually start to gain momentum from this point. Small momentum की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा momentum की बात नहीं कर रहा हूँ. And then it will retest. It will actually not 100% retest, but it will try to retest this partially and continue the same momentum like this. And you will start to think that this is a breakout and you have missed out all in the rally and it's the time to enter now. Okay. So at this point हम क्या करेंगे? अगर आपको enter करना भी है इसमें तो you will start to enter your 1/3 of your quantities here. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा कि जो भी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर का हाई होगा तो दे विल ट्राई टू शो यू कि ये हाई ब्रेक हो चुका है, मतलब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो चुकी है एंड अभी ये हाई भी हम ब्रेक करेंगे. मतलब मैं एज इन टर्म्स बोल रहा हूँ आपको कि प्राइस एक्शन के हिसाब से समझो, प्राइस एक्शन के मोमेंटम के हिसाब से आप समझो उसको. तो एट दिस पॉइंट व्हाट माइट हैपन इज कि ये इसको अगेन एंड अगेन रिटेस्ट करेगा एंड it might give you something false scenario, something like this, and it will break below this range
एंड इट विल स्टे इन कंसोलिडेशन रेंज। तो आपको क्या करना है इसमें, तो समवेयर अलोंग द वे अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी आपने एंट्री करी है एंड यू डोंट सी अ सक्सेसफुल बाउंस अबाउट दिस प्रीवियस हाई विथ मोमेंटम विथ वॉल्यूम, अगर आपको ऐसा कोई बाउंस उसके ऊपर नहीं दिख रहा है, यू हैव टू बी अलर्ट कि आपका जो लॉन्ग है वो खतरे में हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि आपका जो भी लॉन्ग रहेगा, जो भी पोजीशन आपकी रहेगी, साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने कितने क्वांटिटी से वहां पर एंट्री करी है। So let's say if you are entered very heavy into the positions like this, something like psychological scenario, psychological chain action will trigger at the points like this, and you start to think ab to ye girega, you will exit at this point. So try to keep your positions low at the initial level when you see the breakout. Anything अगर आप कुछ भी दिखे आपको, तो आपको उसको उसमें डायरेक्टली जंप नहीं करना है। तो यही एक बात समझो। तो जब भी एंड यू विल most probably see the stop loss hunting scenario at the places of slow momentum most of the times. So what it will do is, and let me draw one more thing here. Let's say this is the VWAP. This VWAP is traveling something like this, and the price of the VWAP is around here, and EMA will be something around here. But let's consider the first scenario where we are considering the stop loss hunting at the VWAP levels. Okay, so something like this will keep happening, and eventually once it loses the momentum all of it has, it will not gain upside momentum. Actually it will gain the downside momentum faster, and the price will touch the VWAP. And if this is a really a stop loss hunting, price will bounce back sharply from these levels and eventually come above this resistance level at this point. So let's say you have entered long here, so we don't know कि momentum slow होने वाला है कि fast होने वाला है. Let's say you entered a long here, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस होगा जो भी ये प्रीवियस लो बना रहा है, लो के बाद लो बना रहा है, मतलब अगर ये हायर हाई बना रहा है उसमें, तो कुछ लोअर हाइज भी बनाएगा ना ये, तो उसी लोअर हाइज के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा. ओके, सो लेट्स से एट दिस पॉइंट इज योर स्टॉप लॉस, and if price is broken above this, there is no point setting your stop loss here. You have to move up your stop loss somewhere like this. And at any case scenario, if you see that the momentum is getting lost, you have to keep your stop loss closer, or directly manually you can exit from your positions, convincing yourself that कि ये इसके ऊपर ब्रेक होने के बाद I will enter fresh long with the same stop loss. Okay, तो ये बात तो क्लियर है आपको कि जो भी मोमेंटम, जो भी कोई भी ट्रेड रहेगा, उसके पहले अगर आपने उसमें एंट्री करी है, तो आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका साइकोलॉजी लेवल डिपेंड करेगा कि आप कितना पैनिक कर रहे हो, कितने भी मतलब जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, अगर उसमें अगर छोटे से भी मूव से अगर पैनिक कर रहे हो, तो दैट इज द ओनली रीजन कि आपका पोजीशन साइजिंग खराब है. तो आपको अपना पोजीशन साइजिंग पे ज्यादा ध्यान देना होगा. तो एट दिस पॉइंट लेट्स से यू हैव एंटर्ड हियर एंड समवेयर अलोंग द लाइन यू फील दैट कि मोमेंटम लॉस्ट हो रहा है, इफ यू मैन्युअली एग्जिट दैट विल बी अ रियली गुड डिसीजन एट दिस पॉइंट. सो सिनेरियो नंबर 1, VWAP रीटेस्ट एंड बाउंस. सो इसको हम देखते हैं एक बार. So let's say if you enter long, your exit will be here for long. Okay, हमें यहाँ पर at this point कुछ भी नहीं करना है. अगर आपको ट्रैप्स में अच्छा खासा अगर आप ट्रैप आइडेंटिफाई कर सकते हो, so actually you can enter a short entry at this point. कि रिवर्स एग्जिट होने के बाद आप यहाँ पर शॉर्ट एंट्री कर सकते हो, बट आपका टारगेट होगा VWAP. बट ये हम बाद में समझेंगे. ओके, बाद में मतलब आपको रियल मार्केट में समझाऊंगा मैं, लाइव मार्केट्स में ये सब. तो अभी के लिए हम बस स्टॉप लॉस हंटिंग देखेंगे. ओके, स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों करी जाती है? सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भी someone whoever is controlling the market, he has been trying to push the price higher but at a slow momentum where everybody can notice कि price तो ऊपर जा रहा है and we're missing out on the rally. price ऊपर जाता हुआ क्यों दिखेगा आपको? क्योंकि फ्यूचर्स ऑप्शन जो भी रहेंगे ना, तो वो स्लोली मूव करेंगे and you will not get actually a really good reward slow momentum with options. Sorry for that. And then आपको एक बार ऐसी चीज दिखेगी तो सारे के सारे जो भी ऑप्शंस ट्रेड कर रहे होगे ना आप, जो भी ओटीएम ट्रेड करोगे आप, जो भी आईटीएम ट्रेड करोगे, जो भी मतलब नियर ओटीएम ट्रेड करोगे, तो उनकी जो भी प्राइसेस रहेंगे, प्रीमियम्स रहेंगे, एट दिस पॉइंट दे विल बी ऑलरेडी मूविंग स्लो. एंड वंस समथिंग लाइक दिस हैपन, दे विल क्विकली टेक अ डीप डाइव बिलो इवन दिस रेंज. अगर ऑप्शन फ्यूचर्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो ऑप्शन काफी नीचे जाएगा एंड देन it will start to decay at this point. So this is actually done for the option buyers who are aggressive and all that. तो आपको ये अवॉइड करने के लिए बस एक ही चीज करनी है, आपका जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो तो इस रेंज में रहेगा ऑब्वियसली. ओके, तो once your stop loss get triggered, you don't have to enter or jump into short at the exact point.
क्योंकि क्या है कि जब तक प्राइस वीवैप के ऊपर है, अगर आपको शॉर्ट करना है, अगर आपको ट्रैप समझ में आते हैं, अगर आपको आइडेंटिफाई कर लिया आपने यहाँ पर ये तो ट्रैप है और आपको इसमें शॉर्ट करना है, इफ यू वांट टू शॉर्ट इट एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड ये तो ट्रैप है, इसको शॉर्ट करना है, एंड देन यू कैन सेफली शॉर्ट एट दिस पॉइंट. एंड रिमेंबर, अग्रेसिव शॉर्टिंग ऑफ ट्रैप्स हैज टू बी ओनली डन if you are if you are experienced enough into identifying traps. Okay, so let's say if you have not entered short here, and even if you have entered short, आपका stop loss तो यहाँ पर रहेगा as explained in the previous session. आपका stop loss तो यहाँ पर रहेगा, let's say conservative trader के लिए यहाँ पर रहेगा, and aggressive मतलब जो भी risk ले सकता है trader उसके लिए वो यहाँ पर रहेगा at this point. So let's say this is the scenario of a stop loss hunting, and आप ऐसे मोमेंट पर actually प्री अटेम्प्ट कर भी सकते हो, कोई भी अगर डिसाइड कर भी सकते हो कि अगर ऐसा मोमेंटम कोई हो रहा है, देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि वहां पर एक स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है. आइडेंटिफाई दैट कि आइडेंटिफाई मतलब आप एक अंदाजा लगा सकते हो अगर मोमेंटम इतना स्लो चल रहा है, तो देयर विल बी एटलीस्ट एन वन अटेम्प्ट टू हंट ऑल ऑफ these weak buyers who have entered here out of FOMO or something, and they will push them out, and if they want to take the market up, then they will move all of these players out, and then इवेंचुअली इसके बाद जो मोमेंटम आएगा ना, एक्चुअली एंड आई हैव नोटिस्ड दिस लॉट्स ऑफ टाइम, ये मोमेंटम काफी हाई रहता है. उसके बाद जो भी मोमेंटम आता है वो रीटेस्ट करके चला जाएगा, या फिर डायरेक्टली इट विल ब्रेक ऑल ऑफ दोस प्रीवियस हाइज इन वन कैंडल इटसेल्फ. ये भी होते हुए देखा है मैंने काफी बार. तो ये बस आप देखो कि तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है. आपका लॉन्ग इन एनी केस सिनेरियो आपको लेना देना नहीं कि इसके नीचे जाकर प्राइस क्या करके आई है. आपका लॉन्ग जो भी होगा फ्रेश लॉन्ग, वो तो प्रीवियस हाई के ऊपर ही ट्रिगर होगा, समवेयर लाइक दिस. बट इफ यू सी समथिंग सिनेरियो लाइक दिस हैपनिंग, कि अगर इफ यू सी प्रूफ फ्रॉम प्राइस एक्शन कि यहाँ पर वीक हैंड्स को रिमूव किया जा चुका है, दैट मींस इफ द वीक हैंड्स हैव बीन रिमूव्ड विद द वे ऑफ ट्रैप्स एंड स्टॉप लॉस हंटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, यू हैव टू नॉट हेजिटेट एंटर एट लॉन्ग एट दिस पॉइंट. मतलब अगर आप ऐसा कुछ इतना बड़ा हिकअप अगर आप प्राइस में देखोगे, and if you still are hesitating to take a long at this point, that means there is something wrong in identifying your price action scenarios. And remember, ऐसी चीजें most of the people don't teach. मतलब जो भी होता है ना कि they will teach support and resistance, they will teach all of this stuff in the world, but they will never teach you something like this. तो मेरा एक फंडा है कि I will always look for a hiccup in a price action before I take a trade. And if there is a trade, I will and if there is a hiccup, already a hiccup in a price action, I will not hesitate to take the next trade. So at this point explained clearly, आपका जो भी फ्रेश लॉन्ग रहेगा वो आपको यहाँ पर ट्रिगर होगा. लेकिन आपका नॉर्मल केस सिनेरियो में भी यहाँ पर लॉन्ग ट्रिगर होगा. लेकिन अगर आप प्रीवियसली ऐसा कुछ सिनेरियो देखते हो इन अ प्राइस एक्शन, यू हैव टू नॉट हेजिटेट. मतलब आप यहाँ पर हेवी भी जा सकते हो, बट आप शुरुआती जब भी आप ट्रेड करोगे शुरू करोगे तो आई एडवाइस कि आप स्मॉल क्वांटिटी से ही करो. अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो तो ओनली गो विथ वन लॉट एंड अफोर्ड द रिस्क. आपको अगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो आप ओनली विथ वन लॉट करो इसको एंड स्टार्ट टू एड मोर क्वांटिटीज अबव दिस पॉइंट. एंड दिस इज नॉट अबाउट द इंडेक्स एक्चुअली गाइस, दिस इज अबाउट एवरी स्टॉक, एवरी everything that gets traded in the price action scenarios and everything that has candles period. Okay, तो एक बार आपने एक स्लो मोमेंटम देखा किसी भी प्राइस एक्शन में, अंडरस्टैंड दिस कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर रहा है एंड देयर इज नो मोमेंटम इन इट, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये आपके स्टॉप लॉसेस उड़ाने के लिए नीचे आएगा एंड इट विल ट्रिगर ऑल ऑफ योर स्टॉप लॉसेस इन द वीवैप जोन, मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस. क्योंकि क्या होता है कि इतना बड़ा अगर कोई डाउन मूव आता है तो ये प्राइस सस्टेन होने की चांसेस कम होते हैं. सस्टेन मतलब जो भी ये यहाँ पर बाय सेंटर करेंगे वो तो पैनिक हो जाएंगे ना पूरे के पूरे, तो दे डोंट स्टे इन दैट. तो ये वीक हेड्स रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर ये दिखेगा. तो आपको ये समझना है कि ट्रैप्स और स्टॉप लॉस हंटिंग में आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको बस एक ही चीज समझनी है इसमें, इसके बाद में क्या होता है. स्टॉप लॉस हंटिंग, लेट्स से कि यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस इज स्टॉप लॉस हंटिंग और नॉट, एंड ये होगा भी काफी बार क्योंकि लाइव मार्केट में आप काफी बार ना समझ पाओ इसको कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग है कि नहीं. सो एट दिस पॉइंट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ गया दैट्स ओके, बट अगर द प्राइस एक्ट्स इन योर फेवर एंड ब्रेक्स all of these previous levels, at this point you don't have to hesitate to enter a long position. Is that clear? Let me turn on the chat section on the side. Okay, so this is the scenario that I want to explain for stop loss hunting at this point. Momentum shock triggers stop loss. Momentum shock बोल रहे हैं कि स्टॉक बोल रहे हैं आप?
ओके क्लियर है? तो सिंपल है, आपको आपको करना क्या है, आपको अगर समझ में नहीं भी आ गया, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि दिस इज स्टॉप लॉस हंटिंग और नॉट, ये काफी बार होता है, मेरे साथ भी होता है काफी बार, बट आई एम ओनली ऑब्जर्विंग दिस प्राइस आफ्टर। अगर समथिंग लाइक दिस हैपेंस, आपको एक ही चीज रिमेंबर करनी है, इफ यू हैव टू ओनली रिमेंबर वन थिंग, इफ देयर इज हिकअप, some big hiccup like this, you will not hesitate to enter long after the previous highs gets broken. Okay, this should be clear. Please do show the best option buying chart setup. तो वो ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग का सेटअप है, उसके लिए हम अलग एक सेशन करेंगे। आज के लिए मैं बस यही कर रहा हूँ, ट्रैप्स एंड स्टॉप लॉस हंटिंग, ये दोनों बेसिक चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ आज के लिए। आई एम गोइंग टू टेक सेपरेट सेशन फॉर ऑप्शन बाइंग ओनली, बिकॉज आई नो कि लॉट्स ऑफ पीपल हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर द सेम। ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको 2 से 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्ट करनी होती है। पहली चीज होती है स्ट्राइक सिलेक्शन। इफ यू आर बायर, इफ यू हैव टू गो फॉर 100% ITM इन द मनी ऑप्शन और द ATM, अगर आप OTM कर रहे हो तो आप खतरों के खिलाड़ी हो, सबसे पहली चीज। एंड अगर एंड 2 मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको स्ट्राइक सिलेक्शन के बाद मोमेंटम कहाँ पर है, मतलब आपको एक अग्रेसिव एंट्री ढूंढनी होगी ऑप्शन बाइंग के लिए, तो वो उसके लिए एक अलग सेशन रहेगा। आपको मैं सारी की सारी चीजें एक साथ में बॉम्बार्ड नहीं करने वाला हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ऑल ऑफ इट टू यू स्लोली। सो आप एक बार ये ट्रैप्स और स्टॉप लॉस हंटिंग समझ जाओ तो आपको कोई भी चीज ट्रेड करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो you will not have any problem trading anything। आपको ये कॉन्सेप्ट आप बिटकॉइन में भी लेके जाओ, ये वर्क करेगा। मतलब ट्रैप्स तो बिटकॉइन में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो संडे के टाइम पे अगर आप फ्री हो कभी भी, तो बी श्योर टू ऑब्जर्व द बिटकॉइन चार्ट्स। स्मॉल टिप फ्रॉम यू, फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू, कि अगर आप वीकेंड में अगर आपको कुछ काम नहीं है तो बी श्योर टू ऑब्जर्व द बिटकॉइन चार्ट्स। आपको investing.com पे बिटकॉइन के चार्ट्स मिल जाएंगे। आपको उसमें कुछ ट्रेड वगैरह करना नहीं है, बस उसके प्राइस एक्शन में ऑब्जर्व करना है। एंड वंस यू सी दैट कि बिटकॉइन जैसा चार्ट अगर ऐसे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकता है, तो हमारा निफ्टी इज नॉट अ बिग थिंग फॉर दैट। ओके, Bitcoin is the actually most complex price action they show in the Bitcoin. Okay, so this is clear. ये हो गया पहला सिनेरियो कि ये VWAP से बाउंस करता जाएगा। So let's say something like this is happening. So this is the first scenario. Let me draw one more scenario. So same scenario, लेकिन ये VWAP को टेस्ट करने के बजाय ये ओपनिंग रेंज हाई और लो को टेस्ट करें। एंड रिमेंबर एवरीथिंग कि ये अपसाइड के लिए ड्रॉ किया मैंने, दिस विल बी द सेम फॉर द डाउन साइड ऑल्सो, दिस विल बी फॉर द अपसाइड, this same thing will be happening for the downside also. So let's say ki price has been slowly going down, something like this, breaks below the support but creates consolidation around the support and then slowly bounces back to the VWAP and then continues its momentum to the downside. At this point you don't have to hesitate to enter short at this point. Okay, तो VWAP इसका जो भी डाउनसाइड का होगा तो VWAP कुछ ऐसा होगा, इसका डाउनसाइड की तरफ ये करता होगा इसका। तो at this point if you observe anything like this, तो आपका ट्रैप भी यहाँ पर कहीं पर ट्रिगर हो जाएगा ना, something like trap setup your trap setup will be getting triggered at this point and you can exit here if you think VWAP से रिजेक्ट हो रहा है। बट आपको अगर ट्रैप में इसमें एंट्री करी है तो you have to exit at this point. If you enter long at this point, let's say you have identified this trap, you entered at this point, but if you are not exited here कि let's say कि आपको कन्विक्शन आ गया है इसमें कि ये ट्रैप है एंड कैन गो बिग, सो आपको एक ही चीज देखनी है इसमें ट्रैप के हिसाब से भी आपको स्टॉप लॉस जो भी होगा वो यहाँ पर 100% ट्रिगर होने वाला है। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, जो भी मैंने अपसाइड के लिए एक्सप्लेन किया वो भी डाउन साइड के लिए भी अप्लाई होगा। ओके, तो दैट्स अ कॉमन सेंस। ओके, स्टॉप एंड रिवर्स, यस ऑब्वियसली। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट केस सिनेरियो फॉर VWAP को टेस्ट करके वापस चले जाएगा और we will call it as a VWAP retest. Lots of people will call it as a VWAP retest and all that, but that's main जो भी उसका रीजन रहेगा that will be hunting the stop losses of weak players. तो मार्केट आजकल ये काफी ज्यादा बार कर रहा है। ओके, सो let's understand one more setup कि ओपनिंग रेंज हाई और लो के हिसाब से कैसे एक्ट होता है ये सब। तो लेट्स से दिस इज ओपनिंग रेंज हाई and this is opening range low. So let's mark it with green color to understand this is a high. Green color. Okay, this is opening range high and this is opening range low. Low को हम red से mark करते हैं. Okay, so let's say this is the high and the price, the same case scenario, huh? This we don't have to change the momentum thing or something else. वही चीज सेम चीज होगी। लेट्स से VWAP is something like this. तो VWAP एक्चुअली कैसा होता है ओपनिंग रेंज के लिए? VWAP acts strangely for something for opening range, तो ये ऐसे बाउंस करके स्लोली ऊपर 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 चला जाएगा ऐसे।
एंड इट विल गो लाइक दिस। तो ये कभी भी एक मतलब सिमेट्रिकल एंगल में नहीं चलता, वॉल्यूम के बेस पे चलता है। एंड ऑब्वियसली अब अगर वेब यूज कर रहे हो तो आपको फ्यूचर के चार्ट को देखना है। ओके, प्लीज इरेज दैट ग्रीन डूडल्स ऑन द स्क्रीन। कौन से वाले की बात कर रहे हो? ग्रीन डूडल। लेट मी कंफर्म दैट कि आप अभिषेक करी हो और आर यू समवन एल्स। क्योंकि कोई भी सेशन में अगर कोई जूम के नाम के आईडी से अगर आ रहा है अभिषेक कर से, दैट विल बी लाइक, लेट मी कंफर्म दैट डूडल्स इसको इरेज करना है। देयर इज नो डूडल्स ऑन द स्क्रीन आई थिंक। आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग। डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन वो तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। Anyways, we're not getting confirmation from him, but let's continue. Is someone else? Yes. I don't know. Okay. Anyways, let's continue with our. I don't know what to say at this point, but if you are really him, it will be a really big achievement for me. But I don't know if it's true or not. Anyways, हम एक चीज की बात कर रहे थे, वो था कि स्लोअर मोमेंटम। लेट्स से ये ओपनिंग रेंज के ऊपर से ब्रेकआउट देके जिस प्राइस इज ट्रैवलिंग इनटू समथिंग लाइक दिस, एंड द सेम के सिनेरियो आपको इसे स्लो मोमेंटम को ही देखना है बस। अगर आपने यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग किया भी है इसका, इससे वी विल बी कंसीडरिंग दिस एज सक्सेसफुल रीटेस्ट ऑब्वियसली, एंड विल बी एंटरिंग लॉन्ग। हमारा जो भी लॉन्ग्स होगा वो यहाँ पर ट्रिगर होगा। ओके, अब ठीक है, एंड अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पर रहेगा उसके नीचे। एंड इफ यू आर अगर टेकिंग अ बिट ऑफ रिस्क, आपको रिवर्स रिटेस्ट का वेट करना है इसके लिए। तो रिवर्स रिटेस्ट मतलब क्या, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। अगर ये इसका वेट कर रहे हो आप, ऐसा कुछ होने का, उसके बाद आप एग्जिट करोगे 100% एग्जिट जब आपको चाहिए होगी, समथिंग लाइक दिस, तो आप 100% आप वहां से एग्जिट करोगे। सो आपका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर भी है तो आप एक बार आप एक ऐसा पैटर्न दिख गया आपको, तो यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट वन। ओके ओके, so let's remove these and continue with our stop loss hunting setup. तो आपने यहाँ पर लॉन्ग एंटर किया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? at this point. Okay, and then the price is gaining momentum. Gaining मतलब क्या, स्लो मोमेंटम में चल रहा है, and then it is scaling highs but slowly, very slowly. Assume that these lines are slow. Okay, and the price is eventually breaking this high but with slow momentum. ओके, स्लो मोमेंटम। फिर से आप यहीं पर जो भी बायर्स आपने एंट्री करी होगी यहाँ पर, यू विल बी इन अ गुड प्रॉफिट एट दिस पॉइंट। बट रिमेंबर कि अगर आपका मोमेंटम स्लो है तो आप अपनी पोजीशन स्लोली इसको पार्शियली कवर करना शुरू कर दो। ओके, बट रिमेंबर समथिंग लाइक दिस, दिस कैन हैपन, और ये होगा। आप इसको लाइव मार्केट में देख के समझ जाओगे कि ऐसा होगा कुछ, एंड you will start to think you have missed out all on this rally, and now you have to enter at this point. That is the main point that they are looking for you to get into the long setup for this one. So something like this will happen, slow momentum, and then the price will get consolidation zone, something like this. तो ये डायरेक्टली भी हो सकता है कि यहाँ पर से इसको रिटेस्ट करके वापस चला जाए, बट एट दिस पॉइंट दिस विल बी मोस्ट लाइकली इन कंसोलिडेशन जोन, एंड आपको ये थ्रो ऑफ करने की कोशिश करेगा at both sides. And then the VWAP level we actually talked about, instead of that it will be retesting this opening range high. ये opening range high है ना हमारा, opening range high, and then it will try to retest that. तो ये काफी स्पीड से आएगा, इसका मोमेंटम काफी ज्यादा होगा, and then it will remove all these buyers. It will remove all of these buyers, उनके स्टॉप लॉस जो भी है उनके स्टॉप लॉस हिट करके ये वापस instantly bounce back. It may not even pull back some in the cases like this. अगर इसका मोमेंटम, अगर इसका मतलब पर्पस ही यही होता है कि अगर आपका अगर स्टॉप लॉस हंटिंग है, इफ यू नो कि अगर स्टॉप लॉस हंटिंग है तो इसका जो भी मोमेंटम रहेगा उसके बाद में ये काफी हाई रहेगा। तो सेम केस वेब के समय में जो आपने करा बाय एंट्री एंटर करने के लिए, तो वो आपके बाय एंट्री यहाँ पर ही ट्रिगर होगी। बट एंड सेम केस सिनेरियो, आपको यहाँ पर बाय एंटर करने के लिए हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि आपको एक बड़ा हिकअप मिल गया प्राइस के लिए, आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल गया कि जो भी वीक प्लेयर्स थे वो तो आउट हो गए, तो जो भी whoever was trying to take the price up will take it up with momentum now because they have removed all the weak hands. Okay, so this is clear. तो ये ओपनिंग रेंज हाई को रिट्रेस करेगा,
एंड इफ रिमूव दिस, वेट, तो ये कंट्रोल Z, ओके। सो क्या कर रहा था मैं, ओके, तो वीवेप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। सो वीवेप समवेयर में बी हियर। सो अगर ये स्टॉप लॉस हंटिंग, डीपर स्टॉप लॉस हंटिंग करना चाहते हैं वो लोग, सो दे विल टेस्ट द ओपनिंग रेंज हाई एज वेल एंड देन द प्राइस बाउंसेस बैक। एट एनी केस सिनेरियो, if you feel like this is a trap and if you enter short at this point, you will be getting a really good क्या बोलते हैं उसको, कि रिवॉर्ड मिलेगा आपको काफी अच्छा खासा, एंड यू कैन सेट दिस ओपनिंग रेंज हाई एज योर स्टॉप लॉस, एक्चुअली स्टॉप लॉस नो, टारगेट एक्चुअली, अगर आप यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हो तो। ओके, आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस इन फ्यू मिनट्स, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं। ओके, सो अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करते हो एंड इफ यू सी दैट की प्राइस हैज बीन बाउंसिंग बैक फ्रॉम द ओपनिंग रेंज हाई, you should be exiting at least 50% of your position and then wait for this retest or something. And अगर आप stubborn हो गए इसमें, if you get stubborn and arrogant in your position, ये तो trap है, ये तो गिरेगा, and if you don't even cover at this point, there are high chances that you will get trapped yourself and the price will be scaling new highs and you will lose huge amount. Okay, so ये clear है ओपनिंग रेंज हाई का और VWAP का सेटअप दोनों में से। Do you know any live market? I have actually identified the live market stop loss hunting examples. So you will see in the course of next 30 days कि अगर कोई live market example आपको दिखेगा, then I will definitely post it on our group everywhere. Okay. So this is clear. This is actually a really important concept. Yes, you will understand more in the live market. So क्या होता है कि this is just a concept. तो उसके लिए मैं live market analysis जो करता हूँ, that will be the main point for all of this. कि अब जब तक आप लाइव मार्केट में इसको सुनोगे नहीं, you will not be getting conviction and entry and all those points. Okay, so this is clear. Any queries right now you can ask me, and इसके बाद अपन सेशन खत्म करेंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स आज हम बात करनी थी, एंड विल बी टेकिंग मोर सेशंस। जो हम पहला लेंगे इसके बाद में वो होगा ऑप्शन बाइंग के लिए। विल टेक द फर्स्ट सेशन आफ्टर दैट, आफ्टर दिस नेक्स्ट संडे लेंगे प्रोबेबली। आप इसी कॉन्सेप्ट्स को फॉर द नेक्स्ट 7 days अप्लाई करो इन द लाइव मार्केट्स। नेक्स्ट संडे को लेंगे वो सेशन। ओके, मंडे एक्सपेक्टेड गैप डाउन एंड ओपन लो, कैन यू एक्सप्लेन मंडे एक्सपेक्टेड गैप डाउन? वो मैं प्रेडिक्ट नहीं करता एक्चुअली, अगर है तो वो मंडे का मंडे को देखिए। वो स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी हम एक और सेशन लेंगे। दिस वाज जस्ट फॉर ट्रैप्स एंड स्टॉप लॉस हंटिंग। 1 मिनट की चार्ट में देखो आप ट्रैप्स को, ओआर को आप 1 मिनट की चार्ट में देखो अगर आपको ट्रेड करना है इसको। आई यूजुअली ऑब्जर्व इन 1 मिनट ओनली। ओके, सो anything else? अगर कोई if anyone has any questions regarding this traps and stop loss hunting, this can I can answer them right now, and उसके बाद अपन सेशन को खत्म करेंगे। ओके, yes, stop loss hunting is everywhere, literally everywhere. स्पेशल सेशन नहीं है भाई, there is no session today. इंडाइसेस में नहीं, स्टॉक्स में भी वर्क करेगा ये, क्योंकि प्राइस एक्शन में जहां पर ये मैंने नहीं लिखा, आई थिंक समवन हैज पर्सनैलिटी मिस और समथिंग तो है। देयर इज नो स्पेशल सेशन। हाँ, आई विल टेक अनदर सेशन नेक्स्ट वीकेंड। रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, आपको मैं सेंड कर दूंगा। ओके, so how was the session in overall? Understanding basis, can buying be done at retest or price cost? नहीं, आपको जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं है, तब तक आप लॉन्ग एंटर नहीं करोगे इसमें। ओके, जब तक आपको कंफर्मेशन मिलेगा ना कि यहाँ पर एक्चुअली हो चुके ऐसा कुछ। ओके, तो वेट फॉर कंफर्मेशन ऑलवेज की ट्रैप सेट हुआ है तभी आप एंटर करोगे,
एंड रिटेस्ट के बाद ही एंटर करोगे, रिवर्स रिटेस्ट के बाद. ओके, सेशन और ग्रेड टेस्टिंग. यस, रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल. ऐसा कुछ नहीं था. थैंक यू एवरीवन फॉर द फीडबैक. Live session at 9:30 am. Someone is impersonating. Someone has walked into the session. Okay. Okay. Let's end this meeting. Thank you everyone. Live session नहीं होगा. क्या live session करेंगे हम इसी week. Thank you.